So, hello everybody. Today's topic will be aneuploidy screening. Aneuploidy screening. This is a very important topic if you consider your NEET PGs because this is a topic which is generally not taught in your MBBS curriculum, but you have questions in your post-graduation MD entrance examination. So basically, what are we going to read today? Aneuploidy means chromosomal abnormalities. Wherever there is chromosomal abnormality, means anything to do with autosomes or your sex chromosomes, autosomes and your sex chromosomes, there you are having these aneuploidies. So, you all know that cell is composed of a nucleus, and nucleus consists of a number of chromosomes. So there are actually 23 pairs of chromosomes. That means you have 46 chromosomes, out of which 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes. So there are 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome. So there can be abnormality in any of the chromosome, and this will lead to aneuploidy. Next page. Okay. So basically, when you have aneuploidies, so the next question comes, what is the most common type of aneuploidy? So most common type of aneuploidy is trisomy 21. Trisomy 21. It means there are three chromosomes of 21 number. So basically there should have been two, but one more is added. So you have trisomy 21. The second most and the third most common trisomies or aneuploidies are trisomy 18 and trisomy 13. Trisomy 18 is also called Edwards syndrome, Edwards syndrome, and trisomy 13 is called Patau's syndrome, Patau's syndrome. And trisomy 21, the most common one is called Down syndrome, Down syndrome. Okay, so why Down syndrome is most common? This is because it is non-lethal. Non-lethal means it does not lead to any abortion of the fetus. So fetus अगर पेट में मरता ही नहीं है trisomy 21 के कारण, so all the babies will be born and then these babies will have morbidities in the form of mental retardation. So most common cause of mental retardation will be trisomy 21. So that is why we have to prevent babies being born from trisomy 21 or trisomy 18 and trisomy 13 so that we do not have morbidity of mental retardation in our society. So let us talk about Down syndrome. सबसे पहले हम Down syndrome के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या questions आते हैं. So Down syndrome के if you have a mother coming to you saying that कि मेरा previous baby में Down syndrome है, now her question is कि इस बार pregnancy में कितना % chance होगा कि baby को Down syndrome होगा. So this is the most common question that people will ask you. That previous baby has Down syndrome, has mental retardation. This time, how much % of the pregnancy, how much % of the fetus will have Down syndrome? तो इसका क्वेश्चन देखो इसका आंसर क्या है डाउन सिंड्रोम और मेंटल रिटार्डेशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स ओके if you consider 100 babies with down syndrome 95% will have trisomy 21 so most common cause of down syndrome is your trisomy of chromosome 21 the rest 4% will have Robertsonian translocation. Robertsonian translocation. Now, इस पे क्वेश्चन आता है what is Robertsonian translocation? I'll be telling you in detail. And 1% has mosaicism. Mosaicism. ये टर्म्स सारे नए टर्मिनोलॉजीज लगेंगे बट यू हैव टू नो देम इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स ना ट्राइसोमी 21 का तो मैंने बता दिया ट्राइसोमी 21 मींस देयर आर थ्री क्रोमोसोम्स ऑफ 21 ठीक है सो rather than two there was three chromosomes now what is robertsonian translocation first of all you should know what is translocation translocation means
एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में देर इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। मान लो दिस इज अ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स ईच। व्हाट हैपेंस इज, यहां से मान लो दिस इज क्रोमोसोम 21 एंड दिस इज क्रोमोसोम 14। तो हमारा क्या हुआ, अब पार्ट ऑफ द जीन फ्रॉम chromosome 21 got translocated to chromosome 14, and similarly there can be translocation from 14 to 21. So अगर क्या होता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ जा रहा है कोई जीन, एंड उस क्रोमोसोम से भी दूसरे साइड रिवर्स साइड आ रहा है, then this is called balanced translocation. Balanced, why this is balanced? Because एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ जा रहा है एंड दूसरे क्रोमोसोम से भी उसके जो ओरिजिनल क्रोमोसोम की तरफ आ रहा है, then this is balanced. And if there is no transfer, if there is no simultaneous transfer, मान लो 21 से 14 की तरफ गया था and 14 से वापस नहीं आया, then it is called unbalanced type of chromosomal translocation. And this unbalanced type of chromosomal translocation is also called Robertsonian translocation. It is also called Robertsonian translocation. So Robertsonian translocation is nothing but unbalanced type of chromosomal translocation. So how what actually is leading to this chromosomal translocation? So basically, when you have translocation from chromosome 21 to chromosome 14, if there is translocation from chromosome 21 to chromosome 14, if this is a balanced translocation means 21 से 14 में गया and 14 से 21 में गया, in that case the mental retardation gene is hidden. It is hidden in the individual. That is, it means it is recessive. ये recessive character होगा। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है जिनके अंदर बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 21 है, then that person will carry the gene of mental retardation, but that individual will not be having mental retardation. But that person can transfer this gene to the progeny. मतलब बच्चे में mental retardation हो सकता है लेकिन उनमें mental retardation नहीं है। अब मान लो a mother and a father, okay, both the couple, they are married, and father is also having balanced translocation of chromosome 21, and mother is also having balanced translocation of chromosome 21. So 21 and 14 के बीच balanced translocation था mother में father में. Then the progeny which will be born will have Robertsonian translocation, okay. So this baby will have unbalanced translocation and this baby will have Down's syndrome. Okay. So this occurs in 4% of the individual. So I hope you have got it. When the mother and the father both had balanced translocation of chromosome 21, then the baby which will be born out of these two parents will have unbalanced translocation and will have Robertsonian translocation. So the patients who have balanced translocation, they in their lifetime, they will not be having any symptoms, but then they will pass it to their progeny. तो इसलिए अगर किसी के बच्चे में रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन मिलता है, then this is an indication of parental karyotyping. Parental karyotyping. Now, this is a very important question which comes in your MCQ is when do you get parents karyotyping done? Parent का कब karyotyping important है? This is the answer is when there is balanced translocation in baby. ओके, बेबी के कैरियोटाइपिंग में बेबी का कैरियोटाइप कराया था, उसमें ट्राइजोमी 21 अगर मिल जाता है फिर तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डाउन सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ ट्राइजोमी. बट इफ यू डू नॉट गेट एनी ट्राइजोमी and you get unbalanced or Robertsonian translocation, then you will have to get your parents karyotyping done. The third cause of Down syndrome was mosaicism. Mosaicism means it is just like the mosaics or the floors of the tiles. There can be the chromosomes, there can be certain parts of the chromosomes will have a bit of deletion and some parts will have addition.
So it is not a predictable one and it can occur in anybody, and this can lead to a little bit, that is 1% of the Down syndrome. Now coming to your the most common cause, that is trisomy 21. Trisomy 21 is responsible for 95% of the Down syndrome cases. So what actually happens in trisomy 21? There is three chromosomes of chromosome 21 that you all know. Now, why three chromosomes happen? This is because when there is cell division, from one cell to two cell and two cell to four cell, ऐसे करके जब division हो रहा है, then what happens? Uh, Actually, if there are like two chromosomes, okay, so the paired chromosomes, one should go to each cell. Okay, this is because, like, suppose if we are considering the ovary, cells of the ovary. So what happens? The germ cells will divide and it will give rise to ova. Now, ovum is haploid. Ovum is haploid. So there, if you have like one is the maternal characteristic that has been obtained and one is the paternal characteristic. So that which you inherit from your mother and that which you inherit from your father. So when the ova are being formed, one of the things chromosomes will go to each cell. Now each chromosome will be containing of two chromatids. Two chromatids रहेगा इसमें, ठीक है? So if the cell is an aged cell, if the cell is not dividing properly, then what will happen कि दो क्रोमैटिड के जगह एक जगह पे एक क्रोमैटिड जाएगा एंड दूसरे सेल में there will be three chromatid which will be transferred. So basically जहां पे तुम्हारा 2 and 2 chromatids divide होना चाहिए था, वहां पे अब ये 1 chromatid एक जगह पे आया and 3 chromatids दूसरे जगह पे आया. So why this has happened? This has happened because there was non-disjunction, non-disjunction of chromosomes. So this is the question or PG question that comes. कि तुम्हारा ट्राइसोमी 21 में what is the underlying abnormality? Underlying abnormality is non-disjunction of the chromosomes. This means जो proper disjunction होना था, दो क्रोमोसोम एक में जाना था, one is the maternal, one is the paternal, वो यहाँ पे एक और तीन में डिवाइड हो गया. तो जो वाला सेल ये तीन वाला लेगा, उसमें there will be trisomy, and जो वाला cell will be formed out of this one chromosome out of the pair, then it will form monosomy. Monosomy. So अगर trisomy हो रहा है, तो there is more probability that some of the cells will have monosomy. So trisomy of 21, chromosome 21 will be forming the Down syndrome. अब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर नॉन डिसजंक्शन, मतलब कब सेल डिवीजन में देयर विल बी नॉन डिसजंक्शन. मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज एडवांस्ड एज. सो एडवांस्ड एज में अगर देयर इज रिप्रोडक्शन, like if the maternal age, mother ka age, if more than 40 years, then it has been found that there is more chances of non-disjunction. So pregnancy at an advanced age is more is a prominent risk factor for non-disjunction. So if we consider the baseline risk means मान लो 18 years से लेके 30 years तक, if you consider most of the females have their babies in 18 to 30 years, then the baseline risk is less than 1%. Less than 1% of the babies will have trisomy. ठीक है, तो ये baseline risk है. But as the your this thing increases, so less than 1% का क्या मतलब है? To be more specific, it is 1 in 1500. 1 in 1500. So it is very less, means less than even 0.1%. So 1 in 1500 is the risk. But as the age at pregnancy increases, means 30 to 35 हो गया, then आपका risk हो जाता है 1 in 1000. Okay. Then at 37 years, it is around 1 in 250. And then at 40 years, remember at 40 years, it is 1 in 100, means it is 1%. So as the age increases to more than 40 years, then the risk is 1 is to 50. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
40 years पे it is 1%. This is important. This is also a question that is asked. कौन से एज पे 1% एग्जैक्टली 1% रिस्क है नॉन डिसजम्पशन का? इट इज एट 40 years. ठीक है, मोर देन 40 years हो जाएगा तो लेस मोर देन 1:100 है, दैट इज 1:50 हो जाएगा रिस्क। तो इसका मतलब अगर कोई फीमेल आता है आपके पास और वो ये बोलती है शी इज 35 years old, शी इज 35 years old, then what is the risk of having aneuploidy or trisomy 21 या Down syndrome? It is around somewhere between 1:1000 to 1:50, मतलब 1:500 ले सकते हैं। तो आपके जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें जो ऑप्शंस आएंगे दैट विल बी समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पेशेंट आ गई, पेशेंट बोल रही है कि मेरा प्रीवियस चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम, प्रीवियस चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस बच्चे का कैरियोटाइपिंग कर लिया। ठीक है, सो वेन एवर यू हैव अ प्रीवियस चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, गेट कैरियोटाइपिंग ऑफ द प्रीवियस चाइल्ड। कैरियोटाइपिंग का मतलब है आपका क्रोमोसोमल एनालिसिस। नाउ द क्वेश्चन इज कौन से सैंपल में आप क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हो? The most easily available sample is your buccal smear. This is also a question which is asked. Buccal smear में this is less invasive क्योंकि आप blood smear में भी कर सकते हो. You can take blood sample also. In blood sample, what is the part of the blood that will help you in determining the karyotype? It is the WBCs, remember, because the WBCs have the nucleus. WBCs are living cells and they will have the nucleus, so they will have the chromosomes. It is not the RBCs. RBCs के अंदर nucleus नहीं है and platelets के अंदर तो वैसे ही नहीं है क्योंकि मेगा कैरियोसाइट से ब्रेक डाउन हो रहा है। प्लाज्मा तो एक वाटर है तो उसके अंदर कुछ नहीं है। तो बेसिकली द WBCs ऑफ द ब्लड सैंपल विच विल गिव योर कैरियोटाइप and the non-invasive form is buccal smear. Buccal smear. Other than that, you can take hair samples also. So your hair follicles are also living part. So hair follicles can also yield us karyotype. सो प्रीवियस बच्चे का जिसका डाउन सिंड्रोम था उसको बुला के उसका बकल स्मीयर लेके हम कैरियोटाइप कर लेंगे। जब एक बार कैरियोटाइप हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस रीजन से डाउन सिंड्रोम है। इज इट बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी 21 और इज इट बिकॉज ऑफ अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन दैट इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन और इज इट बिकॉज ऑफ मोजाइकिज्म, ये हमें पता चल जाएगा। अगर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन से है देन हम क्या करेंगे, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी पेरेंटल कैरियोटाइपिंग। मैंने बताया था पेरेंटल कैरियोटाइपिंग मतलब पेरेंट्स का भी बकल स्मीयर या हेयर फॉलिकल्स लेंगे। बट अगर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन नहीं है, if it is trisomy 21 या mosaicism, then no need for getting parental karyotyping done. In that case, our probability of having Down syndrome in this pregnancy is 1% if it is mosaicism, and if it is trisomy 21, then it will depend upon the maternal age. तो maternal age के basis पे मैंने बता दिया, if it was 40 years, then it is 1%. If it is more than 40 years, then it is more than 1%. And if it is less than 40 years, then हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर प्रीवियस बेबी में डाउन सिंड्रोम है, देन हमारा जो रिस्क है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी 21 is 1% in this pregnancy, 1% in this pregnancy, provided that the age is less than 40 years. ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूं। अगर मान लो पेशेंट इज 25 years of age, ठीक है, सो बेसलाइन रिस्क इज 1 in 1500। लेकिन अगर प्रीवियसली एक बेबी में ट्राइसोमी 21 है तो इस बार इस बेबी में होने का रिस्क इज 1%, दैट इज 1 in 100 irrespective of the age। लेकिन जब एज मोर देन 40 years हो जाता है तब हमारा एज का बेसलाइन रिस्क इज मोर देन द रिस्क ड्यू टू प्रीवियस चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम, सो हमारा एज रिस्क विल प्रिडोमिनेट। सो वॉट एवर द रिस्क इज हायर दैट रिस्क वी विल टेक। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अगर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन था तो हम पेरेंटल कैरियोटाइपिंग कराए हैं। अब पेरेंटल कैरियोटाइपिंग के बाद नाउ नेक्स्ट कैसे फॉरवर्ड हमें कैसे मूव करना है, तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है कि अगर
फादर में बैलेंस ट्रांसलोकेशन था कि मदर में बैलेंस ट्रांसलोकेशन था, ठीक है, विच ऑफ द पेरेंट वाज हैविंग बैलेंस ट्रांसलोकेशन. इफ फादर इज हैविंग बैलेंस ट्रांसलोकेशन, then repetition of Down syndrome in this pregnancy is 1%. Okay. But if mother had balanced translocation, now it depends balanced translocation between which chromosome. If it is between chromosome 21 and 14, then this time this baby has 10% chance of unbalanced translocation again and 10% chance of Down syndrome. But if there is uh, uh, a balanced translocation between parts of chromosome 21 and 21 only, means यहाँ से यहाँ पे क्रोमोसोम 21 के बीच एंड यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 21 ही था, then this has 100% chance of Down syndrome in this pregnancy. So this is very important. This means it warrants an MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना पड़ेगा. एंड ऐसे इंडिविजुअल में every time every baby will have Down syndrome, so they have to go for either donor ovum IVF, इसका मतलब दूसरे किसी का ओवम लेके IVF करना पड़ेगा, और they can go for adoption of a baby. Because this female, if she uses her egg for conceiving, then since she is a balanced translocation, a carrier of translocation of chromosome 21, every time she will have a baby with translocation 21, that is Robertsonian translocation, and she will give birth to a Down syndrome baby. So this is very important. So I am revising once more. क्या important था कि डाउन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्राइसोमी 21. 95% ऑफ द बेबीज विल हैव ट्राइसोमी 21, ठीक है. 4% ऑफ द बेबीज विल हैव balanced translocation, that is unbalanced translocation, sorry, that is Robertsonian translocation. अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जा रहा है लेकिन उस क्रोमोसोम से वापस नहीं कुछ आ रहा है, तो इट इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. एंड ये डिपेंड करता है कि कौन से क्रोमोसोम से कौन से क्रोमोसोम में जा रहा है. अगर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पेरेंट का कैरियोटाइपिंग कराएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि फादर में बैलेंस ट्रांसलोकेशन था कि मदर में बैलेंस ट्रांसलोकेशन था, जिसकी वजह से बच्चे में अभी अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हो गया है. 1% of it is because of mosaicism. Mosaicism is something which is non-preventable. Mosaicism are slight addition and deletion changes in chromosomes which can happen because of ultraviolet rays or because of radiation exposure or because of any chemical exposure, and you cannot just remove it. ठीक है, polluted environment से हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, तो ये वाला डाउन सिंड्रोम 1% तो किसी में भी हो सकता है. दैट इज नॉट प्रिवेंटेबल, नथिंग कैन बी डन इन दिस. व्हाट इज प्रिवेंटेबल इज योर रॉबर्टसोनियन एंड ट्राइसोमी 21. सो ट्राइसोमी 21 कैसे प्रिवेंटेबल है? प्रिवेंटेबल है कि यू कैन एडवांस्ड एज में जो प्रेगनेंसी है उसको यू कैन प्रिवेंट. सो योर बेसलाइन रिस्क ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम at the age is this. So 18 to 30 years में जो most common age of pregnancy है, उसमें baseline risk is 1 in 1500, and this keeps on increasing until the age of 40 years when the risk is 1 in 100, that is 1%. ठीक है, सो ये बेसलाइन रिस्क है, मतलब अगर प्रीवियस बेबी में डाउन सिंड्रोम नहीं है तो इस बार अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस एज यू हैव बेसलाइन रिस्क ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम. बट अगर प्रीवियस बेबी में कभी डाउन सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी 21, देन इस बार बेबी में होने का रिस्क इज 1%, दैट इज 1 in 100. बट इफ इट इज, अगर एज लेस देन 40 है तो बेसलाइन रिस्क छोड़ के हम बोलेंगे कि rather than 1 in 1500 you will have 1 in 100, रिस्क होगा 1 in 100. बट अगर एज मोर देन 40 इयर्स हो जाता है तो तुम्हारा प्रीवियस हिस्ट्री का रिस्क से ज्यादा बढ़ के है तुम्हारा एज का रिस्क. सो योर एज रिस्क विल प्रिडोमिनेट ओवर योर प्रीवियस हिस्ट्री का रिस्क.
Then coming to your Robertsonian translocation, if baby has Robertsonian translocation, get parental karyotyping done. If the defect was in father, that is father was having balanced translocation, then this time you have 1 in 100, that is 1% risk of baby getting Robertsonian translocation. If fault was on mother, then you see कि कौन से क्रोमोसोम के अंदर बैलेंस ट्रांसलोकेशन था. If it was 2114, then 10% risk है, and if it was chromosome 2121, then 100% risk hai. So every time that mother is conceiving, she will give rise to a Down syndrome baby. So you tell her कि आपके egg से तो conceive नहीं कर सकते, it is a contraindication. So either you go for donor ovum, in vitro fertilization, IVF कराना पड़ेगा, या फिर you have to adopt a child. Till here, I think it is clear to everybody. Let us move forward. तो अगर हमें पता ही है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बेसलाइन रिस्क है जो कि है, देन व्हाट कैन वी डू? वी कैन गो फॉर स्क्रीनिंग. सो दिस इज आवर बेसिक टॉपिक विच वी विल बी टॉकिंग कि हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं. सो बेसिकली द स्क्रीनिंग दैट यू डू इज इन द एंटीनेटल पीरियड. एंटीनेटल पीरियड मतलब जब बच्चा पेट में होता है उसी समय यू गो फॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग. Universal screening has to be done in all patients so that we know कि any trisomy 21 है कि नहीं है, any Down syndrome है कि नहीं है. So what are the tests that we do? उसके लिए हम टेस्ट को डिवाइड करेंगे into first trimester test and second trimester test. So there are some first trimester tests, there are some second trimester tests. Now these are the questions which come. First trimester में हम क्या करते हैं? We can have two types of tests. One is your ultrasound, one is through ultrasound, and the second is your biochemical markers. Biochemical markers means your blood test. Blood test के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं. So जो अल्ट्रासाउंड है वो हम कब कराते हैं? दैट वी गेट इट डन बिटवीन 11 to 13 plus 6 weeks. Always remember we talk in weeks. So 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन तक मतलब 14 weeks से 1 day less we will get the this specific ultrasound done where we will screen for Down syndrome. So इस स्क्रीनिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेवल 1 स्कैन. लेवल 1 स्कैन भी बोलते हैं इसको, या फिर एन्यूप्लॉइडी स्कैनिंग. सो इस टाइम पे तुम्हारा बच्चे का जो क्राउन रम्प लेंथ है, दिस इज योर बेबी, एंड व्हाट इज द क्राउन रम्प लेंथ विच इज आइडियल? दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट कम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम मेकिंग अ स्टार ऑन इट. जो 11 वीक्स होता है उसमें क्राउन रम्प लेंथ इज 45 millimeters. And at 13 plus 6 weeks, your crown rump length is 84 millimeters. So when the baby is between 45 to 84 mm, it is at that time that this screening is done. So what all things you see in this ultrasound? I'm talking only that which comes in exam. So I'm not talking excess. ज़्यादा अगर मैं बोलना चाहूँ तो then it will go above your head. So one thing is period of gestation कब ultrasound करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज उस समय बच्चे का लेंथ कितना होता है, कितना बड़ा बच्चा होना चाहिए. थर्ड इज व्हाट ऑल थिंग्स यू सी इन दिस स्कैन. नंबर 1 इज एनटी. एनटी इज न्यूकल ट्रांसलूसेंसी. न्यूकल translucency. Okay, nuchal translucency means if this is your baby's face, then the back of the neck, what is the thickness of subcutaneous fat? Okay, so you can just Google and see photos, ultrasound photos. Now this can be a question. This is one of the X-ray ultrasound pictures which is kept in spotting viva. ये पूछा जाता है आपके एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम में. ठीक है, एक बच्चे का ऐसे फोटो दे देंगे जिसमें न्यूकल ट्रांसलूसेंसी विल बी रेज्ड, दैट इज द नेक विल बी थिकेंड. यू कैन इजीली डिनोट इट. सो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी इफ इट इज रेज्ड, कितना रेज्ड है? इफ इट इज मोर देन 3 millimeters. If it is more than 3 millimeters, is a risk factor for Down syndrome. Very, very important. Second thing which is seen is your nasal bone. Nasal bone मतलब नाक का बोन. अगर नाक का बोन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, nasal bone we try to see whether the bone is ossified or not. If the nasal bone is not ossified, nasal bone
is not ossified, then it is also a risk factor for Down syndrome. Okay, because Down syndrome babies will have flat nose, mongoloid feature. They will not have their nasal bone properly formed. The third thing which we will see is maxillofacial angle. Maxillofacial angle. This is very, very, very important thing which I am telling now. So I'm focusing again and again. Maxillofacial angle. There are five things which you see in this scan. Maxillofacial angle. What actually is maxillofacial angle? If this is the face, then this is your maxilla, okay, and this is your frontal bone. So the angle between the frontal bone and your maxilla is actually the maxillofacial angle. So maxillofacial angle normally should be acute. It should be acute or less than 90 degree. But if it is more than 90 degree, if it is more than 90 degree, that is, if it is obtuse, then it is a risk factor for Down's syndrome because such patients will have a slanting frontal bone and the maxilla will be faced downwards. So maxilla will be faced downwards and slanting frontal bone leading to a and obtuse angle. तो तीन चीज हो गया. The fourth thing which we will see is tricuspid regurgitation. Tricuspid regurgitation. So this you all might be knowing. Tricuspid regurgitation. Tricuspid valve होता है. ठीक है. Tricuspid valve is between right atrium and right ventricle. So when you have tricuspid regurgitation, that is when there is ventricular systole, देन ब्लड एओर्टा में ना आके ये वापस तुम्हारा राइट एट्रियम में जा रहा है. तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, that is a heart anomaly, is very frequently associated with Down syndrome. So this is the fourth anomaly. And the fifth anomaly is ductus venosus A wave reversal. Ductus venosus A wave reversal. इसका मतलब है ductus venosus I'll be talking about in fetal circulation. Fetal circulation में remember there is a venous connection between your liver and the this thing inferior vena cava, that is called ductus venosus. So ductus venosus में there will be wave reversal. That is, if there is tricuspid regurgitation, so there is right heart failure, and because of right heart failure there will be ductus venosus, maybe abnormal waveform. So these are the five things which we see. One is nuchal translucency becoming thick, that is your neck के पीछे वाला जो subcutaneous fat है, that becomes thick more than 3 mm. Nasal bone will not be ossified. Number 3 will be maxillofacial angle more than 90 degree, that is obtuse. Tricuspid regurgitation and ductus venosus A wave reversal. If any of the features is present, then you say there is risk of trisomy 21, that is Down syndrome का association. Next आ जाते हैं हम blood markers. Every time ultrasound is only not required. There can be blood tests which can be done in the mother which can help us to say कि Down syndrome बच्चे में हो सकता है कि नहीं. Now these are all screening tests. Remember, they are not diagnostic tests. So हमारा blood test क्या होता है? Blood test को बोलते हैं dual marker. It is a dual marker which is done in the first trimester, that is 11 to 13 plus 6 weeks में. डुअल मार्कर का मतलब है यू हैव टू मार्कर्स, टू हॉर्मोन्स को देखा जाता है. वन इज योर फ्री बीटा एचसीजी, फ्री बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, फ्री बीटा एचसीजी, एंड सेकंड इज योर पैप ए, PAPPA. PAPP is placental associated plasma protein A, plasma protein A, plasma protein A. So it is PAP-A. So these are the two markers, these are two hormones which are seen in the mother. So basically इसका निमोनिक क्या है कि जहां पे नाम के अंदर H होगा, जहां पे H होगा that will be raised in Down syndrome, और जिसमें H नहीं होगा वो कम हो जाएगा Down syndrome में. ठीक है. So basically free beta HCG, HCG में H है तो always remember ये increase हो जाएगा अगर बच्चे में Down syndrome है. पैप ए के अंदर कोई H नहीं है तो ये डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लेवल के लिए दिस इज इनफ कि तुम ये जान लो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है.
अगर तुम पीजी लेवल की बात करें तो हम ये भी जानना होता है कि कितना डिक्रीज हो जाएगा एंड कितना इंक्रीज हो जाएगा, बट दैट इज नॉट आस्क्ड इन नीट पीजी। नीट पीजी में इतना ही आएगा कि तुम्हारा कौन सा मार्कर डिक्रीज होता है, कौन सा मार्कर इंक्रीज होता है। सो रिमेंबर, बीटा एचसीजी विल डिक्रीज increase, sorry, and pape will decrease. So this is dual marker. But you have some other markers also. That is your ट्रिपल मार्कर। कभी कभी हम क्या करते हैं, ट्रिपल मार्कर लेते हैं, उसमें हम तीन हॉर्मोन्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द थ्री हॉर्मोन्स विच आर टेकन इन ट्रिपल मार्कर? One is your maternal serum alpha fetoprotein. Maternal serum alpha fetoprotein. Number two is your free beta HCG, free beta HCG, and number three is your unconjugated estriol. Estriol matlab E3. E3 I had already told in previous class that E3 is produced by placenta. So pregnancy में estriol is the estrogen which is high. ठीक है, तो ये तीन मार्कर को जब हम लेते हैं मैटरनल ब्लड से, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल मार्कर। अब इसमें बताओ, वेरी इजी, कौन सा मार्कर बढ़ेगा एंड कौन सा मार्कर कम होगा इन ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम? अब मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन में एच नहीं है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, बीटा एचसीजी में एच है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल में एच नहीं है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो वेरी इजी, आज के बाद कभी भूलना नहीं है। The third test which we can do is quadruple marker. Quadruple marker. So as the name says, there will be four hormones which will be studied here. So उसमें से तीन hormones तो हमारे triple marker वाले ही तीन हो जाते हैं। जो additional marker है that is your inhibin A. Inhibin A. Inhibin A. अब inhibin में भी H आता है तो it will be increase. Okay. So very easy है, याद रखना। डुअल मार्कर में अलग से मार्कर्स होते हैं। HCG is common in all, but you have PAPE. Okay, so PAPE decreases, HCG increases. Triple marker and quadruple marker. Quadruple marker has one inhibin A addition to triple marker. Triple marker में maternal serum alpha fetoprotein, beta HCG and unconjugated estriol. Maternal serum alpha fetoprotein will be decreased as it does not have H in its name. बीटा एचसीजी में एच है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल डिक्रीज हो जाएगा, इनहिबिन ए में एच है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दीज सीरम एनालाइट्स एंड your ultrasound which is generally done in 11 to 13 weeks, you can know as a result of basic algorithm। एक algorithm लगाते हैं, machine will calculate through a basic algorithm and it will give you the final risk। so final risk हमारे पास आ जाएगा कि क्या है aneuploidy का risk। ठीक है, so final risk if it is 1:250 से ज्यादा, if it is more than 1:250, then you say the mother is at high risk of having Down syndrome baby in this pregnancy. If the risk is between 1:250 to 1:1000, then you say it is intermediate risk. Intermediate risk. And if it is less than 1:1000, then you say it is low risk of Down syndrome. अगर low risk आता है, then you reassure कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हारा pregnancy तो normally चलेगा and you get the baby delivered. If it is intermediate risk or high risk, now in this case, what you can do, you can go for diagnostic test. You go for diagnostic test. अब diagnostic, अभी तक हम जो टेस्ट की बात कर रहे थे वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गया कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बट 100% है कि नहीं, दैट यू हैव टू डू बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे दो होते हैं, वन इज कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, आई नो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, but then this is very important topic and in datta also you have all these things written, but the thing is that we don't generally study in our mbbs. Even I was not taught these things in my mbbs, and during the my coachings I got to know all these things. So chorionic villus sampling and one is your amniocentesis. Amniocentesis, okay. So ये दो है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। एमनियोसिंथेसिस का क्या मतलब है, ये मदर का एब्डोमेन है and this is your uterus. So uterus के अंदर you are having the baby and you are having the amniotic fluid. So what you do is under ultrasound guidance, you will insert a needle into the uterus
and then you will go towards the amniotic fluid, get some amniotic fluid, and उस amniotic fluid में हम karyotyping कराएंगे और देखेंगे कि ट्राइसोमी 21 है कि नहीं, या फिर हमारा रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन या फिर मोज़ेकिज्म ये है कि नहीं. तो वंस वी गेट द karyotyping डन, वी आर 100% श्योर कि बेबी में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, because amniotic fluid will consist of urine of the baby, and urine से हमारा बेबी का cells secrete होता रहेगा. So it is the baby cells is present in the amniotic fluid. So amniocentesis. What is chorionic villus sampling? Sometimes you will find कि amniotic fluid बहुत कम है. In that case, what you do is you get cells from the placenta. Placenta या फिर cord insertion वाले side से you get some cell. So when you get cells from the placenta, it is called chorionic villus sampling. Okay, so chorionic villus sampling is basically done from 11 to 14 weeks, and amniocentesis is done after 14 weeks when the amniotic fluid is good in volume. 14 वीक से पहले amniotic fluid बहुत कम रहता है, तो ऐसे में बच्चे को इंजरी होने का चांसेस है, तो हम प्लेसेंटा से ले लेते हैं सैंपल बाय सीवीएस. और अगर 14 वीक्स के बाद पेशेंट हमारे पास आती है, देन वी गेट एमनियोसिंथेसिस डन. अगर एमनियोसिंथेसिस में डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, देन वी गो फॉर मेडिकल termination of pregnancy, because we do not want to give birth to a baby who is having Down syndrome and thereby leading to mental retardation in later life. So this is all about your aneuploidy screening, how you get the screening done, when you should advise patients to go for screening. कब कराना होता है? 11 to 13 plus 6 weeks. Very very important. Everybody should be knowing इस time को miss नहीं करना है. You have to get the level 1 ultrasound done, whereby you have to check for all these 5 features. At the same time, you get your dual marker done. Dual screening can be done, and dual screening has the highest sensitivity. This has the highest sensitivity of around 92%. Triple marker has lowest sensitivity of 65%, and quadruple marker has 75% sensitivity. So better to get the dual marker done. Okay. And after that, if उसमें high risk आता है, that is 1:250 risk आ जाता है, या फिर final risk is intermediate risk, so better to go for diagnostic testing by either amniocentesis या फिर chorionic villus sampling. If the baby comes out to be having the pathology, then go for medical termination of pregnancy. Otherwise, you can rest assure the mother that there is no problem. You can go ahead with the pregnancy. Okay. And how will you answer a question when patient has previous baby with Down syndrome, and this time what is the incidence of having Down syndrome is what I had spoken to you earlier. So this is all about today's class. Thank you for attending. And from next class, we'll try that we have live lecture. This time we had some problem with the network. Thank you.